In the previous lecture, we have seen file class, in which we have seen some constructor functions or constructor methods under the file class. File class is used to create the files and directories to the specified location. The constructors used in the file class are file. This is important because this creates the file object for default directory where the program is located. You can create the file in the directory where your program is saved. Second, file constructor with parameters directory path and file name creates file object for directory path given as a string. If you are specifying the specific path, it will create the file at the specified location. And the third, constructor with directory and file name creates file object for the directory. So file is the class. You have to create the object of the file class. Here the syntax is given. File class f object will be used to create the file at the specified location. Then these are some methods in file class: exist, is file, is directory, get name, length, get path, delete, and very important, create new file. These methods will be used when you are creating the file using the program. Yesterday we have seen one program in which we have seen how to create a file at a specified location and how to check it with the exist method. And if you are writing some content in the file, the length method will return that bytes. Today we have to see directory in Java. So directory is nothing but the container of the files. That means folder. You can create the folder using the program, using the file class in Java. A directory is a file that contains list of another files and directories. That means you can create folder using this file class. When you create a file object and it is a directory, the directory method will return true. Like exist method, you can use method to check the directory is created or not. So Java file class provides the method mkdir, make directory method, to create new directory, and it will return true if directory is created. If you have used the mkdir method and if directory is created, this method will return true, and if directory is not created, it will return false, or if it is already existed, it will return false. Now example for creation of directory using the file class. So the first important line is importing Java IO file class. So you have to import the file class. You have to import the package java.io, and you have to use the file class. Then the first statement of using the class or creation of class. So public class create directory example, name of class is create directory example, and you have to use the path where you want to create the directory. Okay, so that path can be stored in the string. So here one string is used, this capital FOLDER. This is the final string. That means you can't change this string. Okay, private static final string. Folder is the variable in which you are storing this path. E drive, practical Java folder, और उसमें आप create करेंगे second नाम का folder. Okay. Then the main function, public static void main string. Here you have to use file class, create the object of file class with new file and specify this path. That means you are specifying the string. Folder आपने पास किया यहाँ पर, जिसमें ये path है. Then this boolean boolean data type is used to check whether this directory is created or not. So the method is mkdir. It will create the directory. If it is already exists, it will return false. If it is not there, it will create that directory and it will return true. So boolean created is used.
and we are checking with the mkdir method. So it is if the directory is not there, it will create. If created, it will show this message, folder was created. Else, unable to create folder. Take the screenshot. This is very, very important. For exam point of view, always file class, directory, dictionary is asked in the exam for 5 marks. Take the screenshot, and very simple to understand. File class, directory, creation of file and creation of directory. Directory is what? Creation of folder, and file, creation of file. Take the screenshot. Have you taken the screenshot? पिछले स्क्रीन का लिए स्क्रीनशॉट, डायरेक्टरी इन जावा. Now one more important is file name filter. It is also very, very important for exam point of view. It is also asked for 5 marks. Now what we have to do with the file name filter? Basically, we first deal with the class. This all comes under the file class. But there are some interfaces, there are some classes. The difference between interface and class. What is the difference between interface and class? Last year मैंने लिखाया था ना. Difference between interface and class. Write down the question for class work assignment. Write the difference between interface and class. Write the difference between interface and class. हम क्लास में मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते, लेकिन इंटरफेस में हम मेथड नहीं कर सकते, है ना. तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मेथड इंप्लीमेंट के लिए फिर से क्लास यूज करना होता है. तो जब हम फाइल नेम फिल्टर यूज करेंगे तब हमको 2 प्रोग्राम्स लिखने हैं. एक इंटरफेस का प्रोग्राम रहेगा और एक क्लास का प्रोग्राम रहेगा. ओके. एंड फाइल नेम फिल्टर विल फिल्टर द फाइल्स अंडर द डायरेक्टरी. फिल्टर मतलब हम इफ यू वांट टू सॉर्ट आउट द फाइल, आपने डॉस की कमांड्स एग्जीक्यूट किए तो कैसे आपने अगर आपको लिस्ट करना है फाइल्स तो आप किस तरह से लिस्ट करते थे. एक स्पेसिफिक फाइल का है, याद है कुछ लिस्टिंग, फाइल्स की लिस्टिंग. या फिर हम जनरल विंडोज में भी अगर हमको सिर्फ टेक्स्ट टाइप के फाइल्स ढूंढने हैं या फिर जेपीजी फाइल्स ढूंढने हैं तो हम फिल्टर लगाते हैं ना. वहां पर हम क्या करते हैं, सर्च में char.jpg लिखते हैं तो वो क्या करता है, सिर्फ जेपीजी फाइल्स एक्सट्रैक्ट करता है ना. तो वैसे ही हमको फाइल नेम फिल्टर यूज करना है यहाँ पर. सो हियर फाइल नेम फिल्टर इज एन इंटरफेस इन जावा दैट इज यूज्ड टू फिल्टर फाइल नेम्स. ये क्या करेगा, स्पेसिफिक फाइल टाइप के फाइल्स को फिल्टर करेगा. ओके. सो फाइल इज द क्लास बट फाइल नेम फिल्टर इज व्हाट, इंटरफेस. फाइल नेम फिल्टर क्या है, इंटरफेस है. सो we have to use IO package, use only ext. Now we have to we are creating a class that is having name only ext. अब हम कुछ एक एक्सटेंशन ext एक्सटेंशन के फाइल्स हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं and we are implementing file name filter. Okay. So we have used here string ext and only ext is here the constructor where we are passing ext string. Now we have to extract the file that ends with ext. Okay. So this dot ext, उसके बाद में हमने क्या लिखा है, डॉट प्लस ext. तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर हमको देखना है, पहले हमको एक्सेप्ट करना है फाइल्स एंड चेक करना है ends with ext. So here ends with is the method और यहाँ पर हम पास करेंगे ext जो एंड हो रहे ext एक्सटेंशन से. तो ऐसे फाइल्स को फिल्टर करेगा. ओके. दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम एंड in the second program here we are using the class directory list n.
और ये मेन, यहाँ पर हम मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं, पीछे वाले प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है, वहां पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फाइल नेम फिल्टर। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पर हमको कौन से लोकेशन पे किस फोल्डर के फाइल्स को लिस्ट करना है। सो डायरेक्टरी नेम इज प्रैक्टिकल जावा at E drive. Again, you have to use the file class, create its object, pass this directory name through this file class, then file name filter object. Okay, now file name filter की कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम, only ext, और उसमें क्या पास कर रहे हैं हम, txt. So it will filter all the files under the directory practical java that ends with txt. So string s contains the list of all f2. f2 means ये जो हम प्रैक्टिकल जावा फोल्डर में जितने भी txt फाइल्स है उनको हम पास कर रहे हैं फिर ये स्ट्रिंग s में, और उसको लिस्ट, उसकी लिस्ट फंक्शन से देख रहे हैं। ओके, देन वी आर काउंटिंग दिस फाइल्स एंड वी आर प्रिंटिंग वन बाय वन यूजिंग दिस फॉर लूप। ओके, एंड लेंथ विल used as length gives the size of the file, मतलब फोल्डर में कितने फाइल्स है वो पूरे काउंट इसमें आ जाएंगे। So these two, whenever the file name filter will be asked, you have to write the two programs. ये प्रोग्राम भी प्रैक्टिकल के लिए है, तो आपको पहला प्रोग्राम जो है तो ये लिखना है, देन सेकंड प्रोग्राम लिखना है, तब आपका प्रोग्राम पूरा रन होएगा। टेक द स्क्रीनशॉट, फाइल नेम फिल्टर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इंटरफेसेस कौन से है ये चैप्टर में और क्लासेस कौन से है। टेक द स्क्रीनशॉट, have you taken the screenshot? So I am going to stop the recording now. recording हुई है नहीं आज?